Hi everyone. So in the previous video, we have seen about the different kinds of system, the proportional system, proportional representation basically, and the FPTP. Now we have to see the other aspects of election and representation. So we start our discussion with the first topic of reservation of constituencies. Now I would like to make one thing clear before I actually begin this. All of these things which are given here, they are of course discussed in brief as per whatever is given in your NCERT, so that you understand the mechanism that okay, how this is how the election takes place. But we will have a topic once we finish all the major topics like legislature, executive, judiciary, local government, then you would say the constitutional, non-constitutional bodies. तो हमारे पास एक separate section होगा on the election, the political parties, the reforms, etc., which we'll do towards the end. ठीक है, तो अगेन वी विल हैव अ ग्रेटर डिस्कशन देयर, बट हियर इट इज़ टू ब्रीफ यू, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. लाइक जब आप फंडामेंटल राइट्स करोगे या लेजिस्लेचर को समझोगे, पार्लियामेंट समझोगे, असेंबली समझोगे, तो यू विल कम अक्रॉस दीज टर्म्स अबाउट रिजर्वेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इलेक्शन कमीशन एंड ऑल ऑफ दैट. तो आपको ब्रीफिंग होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर हियर. नाउ, so in the Indian system, we know that we have always had a history of caste-based discrimination. Since ancient time, this has been going on. So if we just allow the FPTP system, it might mean, of course we are allowing it, but if we do not have any other buffer mechanism for that, so only having this system can mean that the dominant social groups and the caste, they can win everywhere, right? क्योंकि वो अपना दबदबा बना लेंगे. And the oppressed social group may just continue to remain unrepresented. So it was understood by the Constituent Assembly that we need to give representation to the groups which might be oppressed, which are oppressed and which might not get representation. Now, even before independence, if you say so, the British government had introduced the separate electorate concept. You must have read this in history. In case you have not, when I am doing the modern Indian history, so when that topic will come, we'll talk on that. अच्छा, separate electorate में क्या होता था? So that was for specific communities, which will mean electorate मतलब the people who are voting, right? So it will mean that for electing a representative from a particular community, only those voters would be eligible to vote who belong to that community. Let's say I belong to any community X and I am contesting an election, ठीक है, from this constituency. So here the people who will be living and who will be voting will belong to multiple communities XYZ, but only the people belonging to same community as that of mine, let's say X, will be allowed to vote for me. So it was about that separate or communal electorate system that was already there. ठीक है. So in the Constituent Assembly it was already decided, and the leaders, they understood that no, we cannot let this continue and we will have the system of reserved constituency. Now it is different. सेपरेट इलेक्टोरेट इज़ फॉर द कम्युनिटी की वोटिंग ही आपको सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो आपके कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं. बट रिजर्व्ड मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ हिस्सा हमने एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग के लिए रिजर्व कर दिया. वोट उसको कोई भी कर सकता है, ठीक है. सो ऑल वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर नाउ एलिजिबल टू वोट, बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग ओनली टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जिनको हमने रिजर्व करा है, या सोशल सेक्शन जिसके लिए हमने रिजर्व करा है. सो हियर वी वर रेस्ट्रिक्टिंग द वोटर्स, हियर वी वर रेस्ट्रिक्टिंग द इलेक्टोरेट विच इज़ वोटर्स, बट हियर वी आर रिजर्विंग द सीट फॉर द candidate who is contesting. Every voter can vote irrespective of whatever community they belong to. I hope you have got the difference. Now, why is this concept of reserved constituency important? This is important for the proper representation of those social groups which have significant size all over the country. पूरे इंडिया में जिनका एक अच्छी खासी ग्रुपिंग है, एक साइज़ है, उनके लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, ठीक है. सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही उनकी रिप्रेजेंटेशन ध्यान दी जा सकती है. नाउ अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट लेट्स से एनी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप एक्स जिसको हमने रिजर्वेशन दिया. नाउ लेट्स से नाउ दे मस्ट बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री मोस्टली. तो ओवरऑल अगर हम कंट्री में देखेंगे तो दे विल हैव अ सिग्निफिकेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, बट लेट्स से इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे might not be getting that sufficient exposure, or let's say their numbers might not be sufficient.
that they could, you know, influence the voters of that constituency that please vote for us. But in the whole country, their numbers might be good enough. So such kind of grouping, people belonging to such grouping get helped by the reserved constituency. कि even if they are not able to influence and get victorious, they will have those constituencies reserved जहाँ से वो contest कर सकते हैं और उनको vote मिल जाएगा. Okay. The constitution does provide for the reservation. So it provides for the reservation of seats in Lok Sabha and state legislative assembly for scheduled caste and scheduled tribes. Now initially it was for 10 years, फिर उसको बार बार extend कर दिया जाता था. अभी 2020 में फिर further extend हुआ. आपने एंग्लो इंडियंस का भी सुना होगा, तो एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन की बात की थी वो 2020 में ख़त्म हो गया था. Even if you don't understand this right now, don't worry, जब हम लोकसभा पे बात करेंगे I will explain this to you. For example, अभी के लिए बस आप remember that it kept on getting extended, और extension का decision कौन लेता है? Parliament. Now such kind of questions are asked in the prelims. They'll give you कि extension of ये जो reservation of seats है in Lok Sabha and state legislative assembly, the decision is taken by, they'll give you options like president, parliament, union government, supreme court, something like this. They can give you the option. So always do not get confused, and here the answer is parliament. And this reservation happens in proportion to the share of that grouping in the population. उनका जो share है population में, उसी हिसाब से ये reservation होता है. Now if you talk about, let's say अगर हम 26 जनवरी 2019 की बात करते हैं, so हमें भी पता है that we have 543 constituency and one constituency means one seat. So लोक सभा में we have 543 elected seats and पॉपुलेशन के हिसाब से उनका डिवीजन है, तो 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब. नाउ द डिसीजन रिगार्डिंग, अब डिसीजन कौन लेता है इस चीज़ को लेके? सो द डिसीजन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन. अब इनके बारे में भी एज आई टोल्ड हम डिटेल में आगे बात करेंगे. नाउ डीलिमिटेशन कमीशन, ये कुछ पॉइंटर्स हैं दैट कैन हेल्प यू इन प्रीलिम्स. So delimitation and commission is appointed by the President of India and it works in collaboration with Election Commission of India. What is the work of this commission? To draw up the boundaries of constituency. So now that you have read that okay, the country is divided into 543 constituency, you should also know that 543 constituency जो है, so who decides each constituency कि क्या होगा उसका दायरा? Delimitation Commission. So they draw up the boundary all over the country and then they see that in each constituency what is the composition of population. Now when we, because हम reservation की बात कर रहे हैं, so each constituency में for the ST population they will see that those having the highest proportion of scheduled tribe, उनको scheduled tribe reservation में डाल दिया जाएगा. ठीक है. scheduled caste के लिए they do two things. फर्स्टली दे पिक द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ हायर प्रपोर्शन होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के, एंड देन दे ऑल्सो सी कि उनको कैसे स्प्रेड करना है, हाउ दे आर स्प्रेड इन द डिफरेंट रीजन्स, बिकॉज शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर प्रेजेंट इन सम ऑफ द स्टेट्स ओनली, बट हियर शेड्यूल्ड कास्ट आपको ऑल ओवर कंट्री में मिलेंगे. तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ध्यान देखते हैं. पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी में हायर प्रपोर्शन लेते हैं, फिर स्टेट के डिफरेंट रीजन्स में हाउ दे आर स्प्रेड, so that it should be evenly spread. This is what they try to do. Now, अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की which has not yet happened, for example SC/ST reservation तो है in the legislature, but the demand for reserving the seats, 1/3 seats for women has been always in question. This has been in demand and this keeps on increasing. Still people say it is being articulated. For women the seats are reserved in the local government, in the rural and urban local bodies, but such kind of a system does not happen in Lok Sabha and Legislative Assembly, and for that to happen we need a constitutional amendment requirement. So every time this has been proposed parliament में बहुत टाइम से, but अभी तक ये हुआ नहीं है. So this can also be one question from prelims that women's reservation कहाँ कहाँ है, तो local government में है but not in the state or the central legislature, and they can also ask you in the mains that you can talk about what are the issues related to the reservation of women. ठीक है, तो उसको आप mains के हिसाब से सर्च करके पढ़ सकते हैं. अभी हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं. Okay. Next is an important component which is of course free and fair election, that in a true democracy you need to ensure this,
and that is the true test of any election system. If it is free and fair, so impartiality honi chahiye, transparency honi chahiye, and the voters' aspiration should be allowed to find the legitimate expression, that you're giving them adequate pathway, adequate right and adequate mechanism through the electoral results. Next, we talk about universal adult franchise and the right to contest. Now, what happens in this case? So, these two things are also answered in the Constitution. If you remember, we have seen that in the previous video I talked about that yes, the Constitution answers two major sets of questions. Let's say who can contest the election, or let's say who is eligible to vote. If you remember this slide, that who is eligible to vote, who is eligible to contest. So this is that point which we were trying to answer in that particular slide or this particular section. So universal adult franchise would be that who is allowed to vote, and thus who is allowed to contest. When we talk about who is allowed to vote, so we understand that the democratic elections require all the adult citizens, right? So all the adult citizens of the country, they should be allowed and they should be eligible to vote in the election. Unko permission honi chahiye. Now till 1989, the definition of adult for us, or the cutoff age, was 21 years. तो आज जो 18 साल है वो 1989 तक 21 साल थी actually. So anybody who would be of 21 years or above that would be allowed to vote. But then by an amendment in the year 1989, this voting age was reduced from 21 to 18. This is a fact you can remember, and there will be no discrimination on any basis. So any adult who is of 18 or above 18 would be allowed to vote. And Constitution clearly answers the question that who are the voters. Now what about who can contest the election? So like all the citizens, adult citizens have the right to vote, all the citizens also have the right to stand for election. Okay? And of course they can become the people representative. You and me also have the right to contest election. Lekin there will be different minimum age requirement for contesting election. For voting there is just one criteria, 18 साल. ठीक है? But for इसके लिए for contesting there is different age criteria. लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है उसके लिए एटलीस्ट 25 years ओल्ड होना चाहिए, एंड सम अदर रेस्ट्रिक्शंस आर देयर. जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ दिस इज कि लीगल प्रोविजन आपको जो मान के चलना है वो ये है दैट इफ़ अ पर्सन हु हैज़ अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट, जेल कोई गया हो अगर 2 or more years के लिए फॉर सम ऑफेंस, एंड द पर्सन इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, तो वो ऐसे लोगों को हम नहीं अलाउ करेंगे. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और एजुकेशन, क्लास, जेंडर, these are not the criteria on which we discriminate between people who can contest election. So that was about the idea of who can vote and who can contest. Next, see that okay, which body is responsible for taking care of all of these. So of course we have the mechanism of an independent election commission, or you call it as ECI, Election Commission of India. So this is a most important effort so that we ensure free and fair election. And what is the work of Election Commission of India? To supervise and conduct the elections, that how you are ensuring the elections happening. ठीक है? And they are assisted by the chief electoral officer in every state, because ये तो central level पे काम कर रहे हैं तो हर state से इनको officers दिए जाते हैं. You also have to remember, before we see the details, you have to remember that the Election Commission is not responsible to conduct the local body election. For this purpose, you have state election commissions being constituted, and they work independently of ECI. When we will do the local government topic, Panchayat municipality, you will come across the Amendment Act 73rd, 74th Amendment. वहाँ पर बात होगी State Election Commission की. So for the time being, you have to remember that Election Commission of India do not conduct the election for local bodies. Then वो किसके लिए election conduct कराते हैं, अब हम वो देखते हैं. ठीक है? चलिए. So this is Article 324 from the Constitution, Clause A, which reads as the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls. Electoral rolls मतलब voting list in simple language. तो इसका related जो भी काम है and the conduct of elections, that is being taken care of by Election Commission of India. So conducting elections for whom? For Parliament, for state legislature, office of president and vice president.
So 4 things you have to remember: Parliament, state legislature, president and vice president, not the local bodies. तो इन चारों के लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. So they shall be vested in a commission, and here the constitution calls that commission as the election commission. चलिए कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल करते हैं. ऑल्दो अगेन व्हेन वी विल डू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वी हैव अ टॉपिक. ठीक है, लक्ष्मीकांत में भी अलग से दिया हुआ है. सो देयर वी विल डिस्कस इन डिटेल देयर ऑल्सो. बट हियर वट एवर इन्फॉर्मेशन NCERT गिव्स विल डू इट हियर. एंड जब हम वो बाद में करेंगे वैसे भी उसको भी बहुत टाइम है. दैट टॉपिक इट विल टेक मंथ्स टू रीच टू दैट टॉपिक. सो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू. बट लेट्स सी व्हाट द NCERT says here quickly. So these are just all the factual information. You just have to remember. There is nothing much about explanations, but I'll go with the slides. So Election Commission of India, if you talk about, firstly this is a constitutional body. Power you are seeing article 324 में लिखा है. Then you have also seen that it is conducting elections for parliament, legislature, state and president, vice president, not for the local government. Then what about the composition? So Election Commission can either be a single member body. इसमें एक member हो सकते हैं या उसमें multi member भी हो सकते हैं. तो उसकी भी एक history है. That till 1989 the Election Commission was a single member body. ठीक है. But before the 1989 election उसमें 2 और election commissioners को appoint कर दिया गया. So now from one body it became a 3 member body. So multi member हो गए. But after the elections the commission again converted to 1. So पहले 1 फिर 3 फिर 1 हो गए. बट अगेन 1993 में द कमिश्नर्स 2 कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड एंड इट बिकेम मल्टी मेंबर. और तब से वो मल्टी मेंबर है. सो इन शॉर्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रेजेंट कॉम्पोजिशन इज 3 member. 1 विल बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर 2 विल बी द इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है. So initially there were many apprehensions that if a multi-member commission can work properly or not. And there used to be differences of opinion also between the chief election commissioner and the other commissioners, that who will have what kind of a power. So the matter was to be settled by the Supreme Court. तो अब एक जनरल कंसेंसस से जो चीज़ चलती है वो ये है that yes, a multi-member body is important and it is in fact more appropriate. Why? Because we are not just letting one person control everything. We are having power sharing and there is greater accountability. So the chief election commissioner will preside over the commission. But ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई more power है. All of these 3 members will have equal power. It is just about कि एक person को हमने head बना दिया. So they will have equal powers. They will take all the decisions as a collective body. Appointment कौन करते हैं? President करते हैं. Advise on the Council of Minister. And therefore it might be, because Council of Ministers is involved here, so it might be possible that a ruling party जो है वो अपने किसी क्लोज को, हितैषी को जो है वो अपॉइंट कर ले टू द कमीशन हु माइट फेवर देम इन इलेक्शंस. तो दिस विल नॉट इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड देयरफॉर दिस फियर वाज ऑलवेज देयर. So people have suggested that this procedure should be changed. Many people have also suggested that you should have a different method of consultation with the leader of opposition and Chief Justice of India also. It should be done, but as such it is not done. The constitution ensures the security of the tenure also, because you have to ensure that they are able to work with full you would say that security, that okay, I will not be removed anywhere in between. So the appointment tenure is 6 years or the age of 65 years, whatever is earlier. They can also be removed before the expiry अगर कुछ ऐसी चीज़ें breach होती हैं तो that can happen by the president if both the houses of parliament they will have a recommendation कि election commissioner को या chief election commissioner को हटाया जाए. स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने नॉर्मल ऐसे दे दिया होता सिंपल मेजॉरिटी तो जो रूलिंग पार्टी होती वो अपने हिसाब से रिमूव करती या नहीं करती. तो हमें वो चीज़ नहीं देखना है, इसलिए हमने स्पेशल मेजॉरिटी. नो व्हाट आर दीज काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, दैट ऑल्सो आई टेक इन वन लेक्चर. फर्स्टली लेट अस फिनिश डिस्कशन बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड before you understand the topics like amendment of the constitution or other features. So अभी तक हमने constitution पे discussion शुरू नहीं किया. We have not yet seen article 1 because once you start discussing on the constitution of India you will come across all of these terms like this majority and that majority, so you will be confused. So all of that topic I'll deal beforehand, don't worry. So election commissioners can be removed by the President of India. This you have to remember. Appointment also by the President of India and
removal also by the President of India. Of course, appointment has to be on the basis of discussion from the Council of Ministers. Okay. Now, if you talk about the functions, काम क्या करना है इनको? So they will supervise the preparation and up-to-dating of the voter list. ठीक है, हर effort वो करते हैं so that they ensure that there should not be any error in the voter list. Like for example, if there are people non-existence of the names of registered voters or existence of names of non-eligible or non-existent, which means that they have to ensure, like if there are registered voters, they are there, they are existing in reality, like alive people are there. Then if there is somebody who is not eligible, गलती से उनका नाम नहीं आ जाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें देखते हैं. They'll also determine the timing of election, कि election हमें कब करना है. They will also prepare the schedule of the election, that when do we contest, hold the election. अब election schedule कराएंगे, so they will firstly notify that okay, इस टाइम पर election होगा. Date बताएंगे जब आपको nomination file करना है. So if you are contesting, firstly you have to file nomination. Then they'll give you the last date for nomination. Then there will be last date of scrutiny, कि जिसने नॉमिनेट करा है खुद को या नॉमिनेशन फाइल करा है, इफ दैट पर्सन इज एलिजिबल और नॉट, वो स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा. देन इट विल ऑल्सो बी गिवन ऑप्शन टू यू दैट इफ यू वांट टू विड्रॉ, लेट्स से आई हैव फाइल्ड द नॉमिनेशन बट लेटर आई फील दैट नो आई डोंट वांट टू कंटेस्ट, सो आई शुड बी गिवन द ऑप्शन ऑफ विड्रॉइंग, वो भी दिया जाता है. फिर डेट ऑफ पोलिंग, द डे वोटिंग विल हैपन, देन द डे ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स, and then the declaration of result. So that entire thing will come under the election schedule. Now during this entire process, the election commission will have the power to take decisions that how you are ensuring a free and fair election to happen. They can postpone the election also, they can cancel the election also. They can do this either in the whole country or some state only or some constituency only. If they feel there is not proper atmosphere, तो अगर उनको लगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कुछ दिक्कत आएगी तो वो कैंसिल या पोस्टपोन कर सकते हैं. देन दे ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसको बोलते हैं. जब भी इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है, आप न्यूज़ में देखते होंगे या फिर टीवी में आपने सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आचार संहिता लागू हो गई है. ठीक है, एज सुन एज द डेट इज अनाउंस्ड, राइट फ्रॉम दैट मोमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इन टू पिक्चर. वॉट इज दिस? सो दे have certain defining features. What details though we'll not do right now, we'll do towards the end of the course, but they will have certain parameters for the parties and the candidates, that till the election process finishes you have certain code of conduct to follow. Like you cannot just act in a way you want to, code of conduct to follow, and a model, a parameter would be given to you. It can also order a repoll in a specific constituency. अगर उनको, if they are not satisfied with the way the elections have happened in a particular constituency, they can ask कि repoll करो, दोबारा order करो वहाँ पर, मतलब दोबारा election करो. They can also order recounting of votes if they feel that counting process was not fair and just. So they can say कि count दोबारा करो, कुछ गलती हो सकती है. The election commission accords recognition to political parties also. ठीक है, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है, स्टेट है, कैसी टाइप की है, एंड व्हाट आर द सिंबल्स दैट दे कैन यूज़, वो सब काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है. द इलेक्शन कमीशन हैज़ वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन. ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि इतना बड़ा इलेक्शन प्रोसेस है, एंड इफ दे हैव लिमिटेड स्टाफ, हाउ डज इट टेक प्लेस? बिकॉज दे आर हेल्प्ड बाई डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑफिसर्स, एंड द होल डिटेल वी विल कवर व्हेन वी डू दैट. अभी आप समझो दैट दे आर कंडक्टिंग द इलेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. आपने सुना होगा ना, स्पेशली द लेट्स से देयर आर सम पीपल गवर्नमेंट एंड वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लेट्स से टीचर्स और सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ड्यूरिंग इलेक्शंस दे टेल यू दैट हमारी तो इलेक्शन ड्यूटी लगी है. सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आप लेते हो, आप हेल्प कर लेते हो, एंड अकॉर्डिंगली इलेक्शन कंडक्ट होता है. सो वंस द प्रोसेस बिगिन, द कमीशन हैज़ कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इलेक्शन रिलेटेड वर्क इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ हो रहा होता है. So the administrative officers of the state and the central government, they are also assigned the election duty. Also the election commission has full control over those officers. The election commission can transfer the officers, they can stop the transfer of officers also. So basically during the time of election, over the officers, the entire control lies not with the central or state government but with the election commission, and they can even take action against them if they do not participate or they do not perform in a partisan manner, यानी impartial नहीं act करते हैं. Over the years, the commission has emerged as an independent authority, जिसने हमेशा कोशिश करी है to ensure fairness in the election process.
इम्पार्शियल तरीके से, अनबायस तरीके से, सो दैट वी protect the sanctity of the process, because in a democratic country it is the electoral process that matters the most. So if you are not able to protect the sanctity of you say the purity of that, it will not make sense. The record of the commission also shows that every improvement in the functioning of institution does not require legal or constitutional change. ठीक है, of course it will not always important कि हमें कुछ legally change करना है. They can do it with a consensus. They are independent, they are assertive पहले से ज़्यादा. Now this is not because their powers have increased, that it is that they are effectively using the power. Power तो है ही उनके पास, but उसको अच्छे से use कर रहे हैं. Since 1951, 52, 17 Lok Sabha elections have been held. You have to write in the comment section when is the next Lok Sabha election. Many more state assembly elections, by elections मतलब बीच में अगर कोई पोस्ट खाली हो जाए तो उसको फिल करने के लिए सब कुछ जो है वो होती है. The election commission had faced many difficult situations also at times, especially let's say कोई militancy affected area है, जहाँ militants हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, तो ऑफकोर्स वहाँ थोड़ी परेशानी होती है. ठीक है, एट टाइम्स उनको पोस्टपोन भी करना पड़ जाता है. जैसे एक एग्जांपल रहा 1991 में, व्हेन द एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग कैंपेनिंग ओनली, तो फिर पोस्टपोन करना पड़ जाएगा. फिर 2002 में भी एक सिचुएशन आई जहाँ पर गुजरात असेंबली में डिसॉल्व कर लिया गया, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है गुजरात में इशूज़ रहे थे. तो इलेक्शन कमीशन फाउंड दैट अगर इस तरह से वायलेंस हो रहा है, ये सब थोड़ा मुश्किल कर देता है. इट बिकम्स इम्पॉसिबल to have free and fair election during the time of any violence or any kind of activity, negative activity happening. So they decided to postpone. Of course Supreme Court also agreed to it कि हाँ ठीक है ये ज़रूरी था. Now let's quickly check something on the electoral reforms. Again the details will be discussed when we do the topic in later detail. ठीक है, अभी बस आपको brief करूँगी. So election commission, political parties, some independent groups, some scholars, so at different points of time they come up with the proposals that okay, this is how the reform should take place. So some of these suggestions are about that how do you change the constitutional provision. ठीक है, जो भी दिए हुए हैं हमारे इलेक्शंस को लेके उनको आप कैसे चेंज करोगे. तो कुछ लोगों का कहना है दैट बिकॉज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम FPTP टू some form of PR system. Although we have seen that what are the advantages, disadvantages, but there are people who recommend that, and for them it is like that this would ensure that parties will get seats in proportion to the votes. Some other suggestion include that there should be special provision to ensure that at least 1/3 women, जो भी बात की, उनका reservation होना चाहिए in the parliament and state assembly. Then there should be stricter provisions to control the role of money. Of course money plays a major role. जिनके पास पैसा होता है वो खरीद लेते हैं वोट, influence करते हैं. सो इलेक्शन एक्सपेंसेस जो हैं वो भी गवर्नमेंट द्वारा पे होने चाहिए आउट ऑफ अ स्पेशल फंड. ऐसे जो सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं जिससे बहुत करप्शन होता है, दिस शुड नॉट हैपन. देन कैंडिडेट्स विद एनी क्रिमिनल केस, उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए. ऑफकोर्स नाउ दैट इज हाउ इट इज़ बीइंग डन, वो हम आगे देखेंगे डिटेल में. सो यू हैव टू गिव योर क्रिमिनल डिटेल्स ऑल्सो. नॉमिनेशन फाइल में आपको अपने सारे आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं तो आपको सब बताने होते हैं. सो दे शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग. जैसे अगर किसी के पास चार्ज भी लगा हुआ है, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी वो वर्डिक्ट नहीं आई है, अपील पेंडिंग है, तब भी उसको अलाउ नहीं करना चाहिए. देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स. पीपल शुडंट प्ले जैसे बोलते हैं ना कास्ट बेसिस पे या रिलीजियस बेसिस पे. देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, एंड दे शुड इंश्योर कि वो लोग जो एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट मैनर में फंक्शन करेंगे. देन अपार्ट फ्रॉम द लीगल, ये तो कुछ लीगल रिफॉर्म्स हो गए. देर आर 2 other ways ऑफ इंश्योरिंग जहाँ हम वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्राई करते हैं दैट द इलेक्शंस रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ पीपल. 2 way. What is 1 way? That people themselves have to be more vigilant. So legal तो जो changes अगर कुछ आएंगे तो आएंगे, that is different, but it is people who are voting, it is you who are voting. So we should एज अ सिटीज़न बी मोर विजिलेंट. हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहिए इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. हमें पता होना चाहिए विच पर्सन इज़ गुड फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, विच हैज़ वर्कड फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हु आर द गुड पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ इट. बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट. ऑर्डिनरी पीपल कितना ही कर पाएंगे. So there are limits that they can engage in the politics on a regular basis, and therefore it is necessary that the political institutions and the voluntary organizations are developed, and they should be actively functioning as the watchdog.
ताकि किसी तरह का गलत डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाए इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. सो द रोल ऑफ पीपल and the role of those political institutions and voluntary organization are also the two ways of ensuring the proper election, apart from the legal ideas that are being circulated. So this was all about the briefing of the election and representation. Now I'll meet you in the next week with the next set of videos. Thank you so much guys. Take care till then. Bye bye.